ओके, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। वालेकुम सलाम। तो अपने कैमरा ऑन करो फटाफट। आज हमें करना है कैमरा ऑन। ओके, हाँ। हमने लास्ट टाइम किया था, आई थिंक, यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस प्रिंसिपल, राइट? हाँ सर। अब इसकी एक कोरोलरी, वो बनाक-स्टाइनर्स किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, ये हमने दिखाया था कि यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इफ एक्स नॉट कंप्लीट। चलो ठीक वो है, देखा था हमने। उसको देखा ठीक से? जी सर। अगर मुझे लगता है उसमें पॉसिबिलिटी है, मतलब अब है ना, जब तुम फेयर करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। कभी कभी मतलब पॉसिबिलिटी है उसमें गलती होने की, लेकिन ऐसे मुझे लगता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उसको ठीक से पढ़ो। अगर तुम्हें कहीं समझ ना आए तो मुझे बताओ। इसको क्या हो गया? अब हैंग हो गया? हाँ ठीक है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ सर। हमारा हमारा 14th को है। जी। ओके, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। पहला यूनिट जो है वो तुम अच्छे से प्रिपेयर करना। सो लेट मी, कैमरा से भी ऑन करो ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। ओके, सो आई हैव बनाक-स्टाइनर्स थ्योरम। मतलब दे आर सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट। कुछ लोग इसी को मानते हैं, यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस प्रिंसिपल को बनाक-स्टाइनर्स कहते हैं, कुछ बनाक-स्टाइनर्स को, मतलब कभी कभी इसको इंटरचेंज करते हैं नामों को। बट इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ जिसको हमने यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस प्रिंसिपल कहा। दैट इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ बाउंडेड लीनियर मैप्स from a Banach space to a normal linear space that is pointwise bounded, then it must be uniformly bounded. Yani the norms of those functions must be a bounded set. So we can just do Banach-Steinhaus theorem, which is a very important consequence of the uniform boundedness principle, Banach-Steinhaus theorem. Now for n greater than or equal to 1, let us state this: let Tn be a collection of bounded, a sequence. Tn be a sequence of bounded linear operators from x to y, be a bounded linear, be a bounded. जब से गर्मी शुरू हुई जो है ना, ये चिपकता है इसको पसीने से ना, ये बोर्ड पे हाथ मेरा। बाउंडेड लीनियर मैप, बाउंडेड लीनियर, चलो ऑपरेटर लिखते हैं। ऑपरेटर फ्रॉम अ Banach space x, Banach space x to a normal linear space y. And a domain has to be complete. The codomain need not be. Why? Such that it converges pointwise, such that Tn of x converges to some t of x for all x belonging to x. Then ये जो limit है, pointwise limit है इसका, यानी t, then t is also a bounded linear operator. Is a bounded
linear rate. Proof इसका uniform boundedness principle. Once you assume that, it's straightforward. Now, since Tnx converges to T of x for all x belonging to x, it follows that T is linear. Linear to automatic है. Point-wise limit for linear functional linear maps would be linear. T is linear. Why? चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. Why would be? Because Tx is basically defined to be limit as n approaches infinity Tn of x. और Tnx सारे के सारे linear है. जिसका मतलब T of x plus y जो है is equal to limit n approaches infinity Tn of x plus y. लेकिन चूंकि Tn's linear है, so you should have limit n approaches infinity Tn of x plus Tn of y. लेकिन जो ये वेक्टर एडिशन है, it's a continuous function as far as normal linear function, normal linear space are concerned. So addition के अंदर हम limit ले जा सकते हैं. So that would be limit n approaches to infinity Tn of x plus limit n approaches to infinity Tn of y. But that's by definition T of x plus T of y. इसी तरह से अल्फा भी बाहर आ जाएगा because scalar multiplication is a continuous operation. So we can take that out, and so T is linear. Done. Okay. So furthermore, we have to show that T is continuous. Now, and of course, चूंकि ये bounded linear operators हैं, so Tnx जो है is point-wise bounded. Point-wise में क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा क्यों होगा? कोई मुझे बता सकता है? Linear तो मैंने बता दिया. For all x bounded क्यों होगा? Because it is convergent. It converges for each x. This thing converges. These vectors converge to this. So if you have a convergent sequence of vectors, it must be bounded, as is the case with convergent sequence of numbers. Idea वही है. And after a certain stage, it becomes arbitrarily small. You take those finitely many and that number and that epsilon. चलो मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि ये point-wise bounded है. Therefore, by uniform boundedness principle, uniform boundedness principle, there exists some k positive such that norm of Tn is less than k or less than equal to k for all n greater than equal to 1. Now, I have to show that T is continuous, so that's rather easy. Norm of Tx is less than equal. It is equal to parallel definition. It is limit as n approaches infinity Tn of x. And as you can see, norm is a continuous function. So you can take the limit out. Now I should write it as this. Okay. अब चूंकि Tn सारे के सारे continuous है, so this should be less than equal to limit n approaches infinity Tn norm of Tn into norm of x. Now this set is bounded क्योंकि सारे के सारे कितना भी बड़ा हो, ये less than equal to k है. So this is less than equal to k into norm of x. So that is, we have shown that norm of T of x जो है is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x, which implies that
what क्या बोलते हैं, T is continuous, जो हमें चाहिए था, यानी T is a bounded linear operator. T is a bounded linear, तो हमने दिखा दिया, linear operator. So that's done. जैसा कि मैंने कहा, it's straight forward consequence. हाँ ठीक है. Okay. Now we come to another idea. चलो पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं, उससे हम एक्चुअली इस डेफिनेशन की मदद से हम नहीं, मतलब ये है एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्म बाउंड्रीज प्रिंसिपल. तो ये है कि लेट एक्स, चलो पहले लिखता हूँ, लेट एक्स बी ए normal linear space and for a subset A of X we say, हम कहते हैं, we say A is weakly bounded if f of A is bounded for all f belonging to the door. ये वैसा ही है जैसे कन्वर्जेंस के लिए. तो हम क्या कहते थे, हमने कहा था xn converges to x weakly if f of xn converges to f of x for all f belonging to x star. ठीक है ना? So that's for weak convergence. Weakly bounded भी वैसा ही है कि A is weakly bounded अगर मैं लेता हूं f of x, ये वाला सेट, such that x belongs to A, which is a scalar set. Now this is bounded for all f belonging to x star. तो वही हुआ कि f of A is bounded for all f belonging to x star. मैं अगर इसकी मैं रेंज लूं in the scalar field under f, तो वो बाउंडेड. एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है, चलो एक थ्योरम की तरह मैं लिखता हूं, a non-empty subset, a non-empty subset A of a normal linear space X is bounded if and only if X is weakly bounded. जैसे वीक कन्वर्जेंस के बारे में ऐसा नहीं होता. वीक कन्वर्जेंस के बारे में होता है कि अगर कन्वर्जेंस है तो इट वुड इंप्लाई वीक कन्वर्जेंस, बट वीक कन्वर्जेंस नीड नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस. हमने वो एग्जांपल भी किए. But here they are equivalent, bounded या weakly bounded. Proof. Now suppose A is bounded. Then mod of fx जो है, it is less than equal to norm of fx into x. This is true for all x belonging to x, and in particular इसका मतलब, okay, in particular modulus of fx then for all f belonging to x star, this is true. In particular, f of x is less than equal to norm of f into
for all x belonging to A, and since A is bounded, there exists some k positive such that norm of x is less than equal to k for all x belonging to A, which implies that f of x is less than equal to norm of f, which is a finite number, into another finite number for all x belongs to A and for all f belonging to x star. Yeah, सीधे लिखते हैं where f belongs to x star, which implies that A is weakly bounded. मतलब ये तो straightforward है. अगर bounded है तो weakly bounded है. Converse actually इसको prove करना है. इसमें थोड़ा सा काम है. Conversely, suppose that A is weakly bounded. A is weakly bounded. So let us write it as let A be equal to xi. मैंने इसको एक indexing कर दी, but इसका मतलब नहीं है कि ये countable set. मतलब मैंने इसको कहा चलो इसका कोई index set लेते हैं. इसको इस तरह से अगर मैं लिखूं तो कोई हर्ज नहीं. And मैंने माना ये weakly bounded है. It implies that now f of A is weakly bounded. A is bounded set of scalars for all f belonging to the dual. So that is, अगर मैं ये सेट लेता हूँ f of xi is a bounded set of scalars for all, ऐसे ही लिखता हूँ, just for all f belonging to x star, it's understood. Now we can identify each xi belonging to A with f sub xi belonging to x double star via the canonical embedding. है ना, हमारे पास है ना, so हमारे पास x can be identified, embedded rather, inside x double star via the canonical embedding. X goes to fx, where it is defined as fx at f is equal to f of x for all f belonging to x star. ठीक है, तो मुझे एक सेट मिलेगा अब x double star में via the canonical embedding. Canonical embedding. So by our assumption, and also, and या सीधे लिखते हैं, then fxi at f is equal to f of xi, which implies that fxi at f is a bounded set for all f belonging to x star. ठीक है, तो अगर ये bounded set है, so it means that this collection of bounded linear maps. Now fxi, चलो मैं लिखता हूँ, fxi is a collection
of bounded linear operators from x star to k, and x star is complete, and x star is complete is a Banach space, always a Banach space. And that is pointwise bounded, which is pointwise bounded. Pointwise bounded, hence by uniformly bounded principle. Yeah, uniform boundedness principle. Uniform boundedness principle. Norm of fxi's ये जो ये है is a bounded set. But हमें पता है ये canonical embedding में ये preserve होता है norm. ये हम कर चुके हैं जब हमने शुरुआत की थी. It implies that xi is a bounded set of scalars, which implies that A is bounded. Okay, तो इसमें हमने uniform boundedness principle use किया, तो we showed that a set is bounded if and only if it is weakly bounded. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Okay, so let's think about this. So let's think about, now we know that, तो पहले मैं अगर मैं थोड़ा notation ले लूं, let me call L to be homomorphisms, just linear maps from X to K, where X is a normal linear space. ठीक है? So I'm talking about, now this is the collection of maps F from X to K such that F is linear. तो हमें पता है what is X star. X star is, इसको हम लिखते हैं BXK. That is all collections from K, है ना? Such that F is linear and continuous. इसका मतलब ये जो X star है, it would also be always be contained in L, है ना? हाँ सर, हाँ सर. Okay. Now what I do, I define a map on L. या ऐसे मैं करता हूँ, for each F belonging to L, we define, इसको बोलते हैं conjugate एक तरह से. No. थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम, doesn't matter. तो ये मैं जरा यहाँ रब करना चाहूँगा. अच्छा, प्रॉब्लम ये है. ओके, इसी तरह से एक और हो सकता है ना. You could have another space. Let me call M. M अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं प्राइम में यूज नहीं कर सकता. चलो U लेता हूँ, U चलेगा. I've got home Y, suppose. Okay, यही सब कुछ है. I've got another normal linear space, right? So then I would also have Y star. Y star would be, of course, YK. Can you see that? यानी ये है जो है खाली linear mappings. Then you can see that Y star जो है, it is contained inside this U. I've got two normal linear spaces. मैंने L define किया, U define किया, all scalar valued linear maps.
right? Now let T be a linear map from X to Y, right? T be a linear map from X to Y. Only linear में कह रहा हूँ, ठीक है? Now define T dash. Now T dash अगर मैं देखूं as a map from U to L by T dash of F. Now where would T dash F कहाँ belong करना चाहिए? It should belong to L. It should be a map on X. So T dash F of X में define करता हूँ F composition T of X. तो मैं इसको थोड़ा अगर स्कीमेटिकली दिखाऊं, मेरे कहने का मतलब है मैंने लिया X, उस पे मैंने void अप्लाई किया. यहाँ लिखता हूं मैं भूल गया. For all U, हाँ ठीक है U है ना, ठीक है, ऐसे में लिखता हूँ. चलो इसको जरा मैं पहले यहाँ रब करूंगा. X में अभी नहीं लाऊंगा क्योंकि इससे गड़बड़ हो सकती है. गड़बड़ नहीं हो सकती है, हमें बाद में करना ही है. लेकिन अगर मैं करता हूँ T of F is a map from F composition T, then for all F belonging to U, then मैं पहले मैं कह रहा हूँ कि ये मैप है, मतलब this is a correspondence between elements of U and L. वो कैसे? Now T जो है, T sends X to Y, right? T sends X to Y. F sends, F belongs to U. U क्या करता है? U में ऐसे सारे मैपिंग्स हैं जो लीनियर है, which send elements of Y to K. So this goes to K. So अगर मैं तुम्हें कहूँ as a composition, ये कैसे एक्ट करेगा? As a composition, F composition T is a mapping from X to K. अब चूंकि F लीनियर है, T लीनियर है, so F composition T is a linear mapping from X to K. X to K है ना? लेकिन ऐसी सभी linear mappings that are from X to K, उनको वो कहाँ belong करती है? L में. यानी F composition T belongs to L because it's a linear mapping from L to K. X to K. So this is a well-defined map. So in this way, I have defined this T dash. Right? Now you have to remember, now look at this. T dash is a mapping. Now X star is a subset of L. है ना? Y star is a subset of U. है ना? And T dash जो है, T dash is a mapping from L to U. ठीक है ना? A linear map. Sorry, U to L. Sorry. अब देखो, अब क्या दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं. अब ये मेरा मान लो है सेट U, ये है मेरा सेट L. ठीक है ना? इसके अंदर एक सबसेट है, that's Y star. इसके अंदर एक सबसेट है X star. Right? So I have got a T dash. That's a map. मतलब defined in this way. और T dash को हम बोलते हैं conjugate of T. क्या बोलते हैं? Conjugate of T. क्योंकि ये T से हमने generate किया. मतलब we have defined it with the help of T. Okay. तो अब देखो, अब जो ये T dash है, it acts upon the whole of Y, whole of U. It means it also acts upon Y star. है ना? So इसका मतलब T dash of Y star जो होगा, it would be contained inside L. T of U. है ना? ठीक है?
है ना, क्योंकि ये सारे का सारा एल में ही होगा। तो इन पर्टिकुलर मैं इस सब स्पेस पे फोकस करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ कि टी वाई स्टार कब होगी इस सब स्टेट सेट के अंदर, ठीक है ना। या मैं देखना चाहूंगा कि when will if some element belongs here, when will it belong in the X star। यानी मेरे कहने का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम मैं प्रूव करूंगा। देखो अभी तक मेरे पास टी लीनियर मैप था, टी वाज अ लीनियर मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। उसकी मदद से मैंने डिफाइन किया टी डैश, आई थिंक फ्रॉम यू टू एल, where what, where t dash at f was f composition t, and जो मेरा u था y star was contained in u because u was from yk, and मेरा x star जो है it was अच्छा मेरा सॉरी मेरा l जो था, मेरा x star is contained in l which was homomorphism scalar valued linear maps, right? So as a theorem, what I want to say, theorem p dash of y star would be contained inside x star if and only if t is continuous। तो अभी तक मेरे पास t is only a linear map। मैं कह रहा हूं अगर t continuous map भी है साथ में linear होने के साथ, then ये जो ये मैप है I can restrict it। ये जो t था मेरा t dash which was a map from u to l, और इसमें y star था और यहाँ पे कोई x star है, तो अगर t साथ में कंटिन्यूअस भी हो तो ये y स्टार को x स्टार पे मैप करेगा, ये इसको दाएं बाएं कहीं नहीं जाने देगा। No, that's the point। ये तो डिफाइंड ही है, लीनियर है ना। अगर t लीनियर है तो t डैश लीनियर है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अगर t साथ में कंटिन्यूअस भी होगा देन ये जो t डैश है ये y स्टार को कहीं दाएं बाएं इसकी इमेज नहीं होगी बल्कि x स्टार के अंदर ही हो। So that's the मतलब वरना कोई गारंटी नहीं है कि वो कहीं भी हो सकती है because after all it's defined on this set। सबसेट्स के साथ ये क्या करेगा हमें क्या पता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर t कंटिन्यूअस हो, यानी जिसकी मदद से मैंने यहाँ ये वाला t अगर कंटिन्यूअस मैप हो फ्रॉम x टू y अपार्ट प्लस लीनियर तो है ही, अगर साथ में कंटिन्यूअस भी हो then it would send this y the subset the subspace y star into the subspace here x star। So which is a proper subspace if x is not finite dimensional or y is not finite dimensional। प्रूफ इसका वैसे सिंपल ही है। तो नाउ लेट S be the closed unit ball in y, in x, sorry, x। then अगर t continuous है it is true if and only if जो कि हमने किया था t of s is bounded because a linear map sends bounded sets to bounded sets, and if a linear map sends bounded sets to bounded sets it's continuous and vice versa। ये हम कर चुके हैं जब ना हमने पहले कहा था कौन कौन से मैप linear और bounded होते हैं। It implies that f of t of s is bounded for all f belonging to y star। Obviously, क्योंकि it's a bounded linear operator, it would set bounded sets to bounded sets, which is true if and but which is the same thing as by our definition this is t dash f applied to s is bounded for all f, that is the definition, f composition t was t dash f for all f belonging to y star, which would imply that t dash at f जो है it belongs to y star as a map।
तो उसका मतलब अगर t कंटिन्यूअस है, t dash at f for all f belonging to y star, oh sorry, must belong to x star, ठीक है, because t dash is a map यहाँ से y से x में. Okay, so we're done. So once we are done, so if अब हम क्या करते हैं, so रिमार्क में हम लिखेंगे, अब मैं ऐसे सोच सकता हूं, t dash restricted to y star is a map from y star to x star. क्योंकि जब इसको restrict करते हैं y star पे, y star is contained in x star and we denote t dash restricted to y star, इसको हम denote करते हैं by t star. यानी t star is then a map from y star to x star defined by t star at f is equal to f composition t for all where of course t belongs to bxy, a bounded linear map from x to y, right? Right, and for this is true for all f belonging to y star. तो इसको हम कहते हैं conjugate of t. So I hope it's clear, क्योंकि हमने कहा अगर t साथ में continuous है, हमने कहा ना t must be continuous for this restriction. अगर t यहाँ belong करता है, then I can define this t star from y star to x star rather than those homomorphisms from y to k to x to k. Okay, once I have defined this conjugate of t, clearly, remark में ही हम जा रहेंगे, clearly t star is linear. Why? Because f और t linear है, तो composition of linear functions is linear, right? Because point-wise operations हो जाएंगे इसमें, because you would have t star of f1 plus f2 would be nothing but f1 plus f2 applied to t, but that would be just f1 applied to t plus f2 applied to t. मैं basically x को हमें यहाँ include करना पड़ेगा. So t star is linear. मतलब ये दिखाने के लिए you just have to act here on. चलो मैं कितना हो टाइम देख रहा हूँ. चलो मैं इसको बंद ही करता हूँ. वैसे 1.5 मिनट है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तुम फिर से ज्वाइन करो ताकि हम आराम से कर सकें. ज्वाइन